evening, students. So I am going to take your first online class on cost accounting. Okay, today I am going to start on process costing. So what is process costing? You might know or may not know. Okay, listen, process costing is the costing which is applied by manufacturing company in which there are many processes followed. Okay, जो कंपनी रे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो कामटा हुए सेइथरे सेटा प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई हुआ और कौन सी कंपनी रे अप्लाई हुआ एग्जांपल मैं हमको होची शुगर केन आखु ओके जेता हम आखु चिनी होची ना शुगर केन रो शुगर होची एंड शुगर इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ फूड्स ओके तो शुगर केन रो शुगर कोन डायरेक्टली हे जाउची आमे ता जूस बाहर करले शुगर हे जाउची होउनी इट इज डन थ्रू मेनी प्रोसेसेस ओके गोटेर आउटपुट अनदर इनपुट बुझे ना सपोज प्रोसेस 1 रे मु शुगर केन रो जूस बाहर करी ताले शुगर केन रो काम सरी आला मु से शुगर केन फोपड़ देली तो रही गला मो पाखरे कोन खाली जूस तार तो ये से कोन देला से जो आखुटा से देला हमको आउटपुट बट से जूसटा कोन हे गला शुगर तयारी हबा पई इनपुट हे गला बुझे ना प्रोसेस 1 रो आउटपुट इज द इनपुट ऑफ प्रोसेस 2 ओके देन अगेन एडा भी चालू थे मु गोटे क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगी देबी सेटा में तुम पूरा क्लियर हो जाए एबे खाली मन रखो जो भी प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेस रे पास हेगी तयारी के सेम थे भी प्रोसेस कॉस्टिंग लागू ओके नाउ होमोजेनियस प्रोडक्ट रे एटा भी मन रखियो सिमिलर प्रोडक्ट एमती नहीं कि हमें विभिन्न गोटे फैक्ट्री रे गोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विभिन्न प्रोडक्ट तयारी करछि सेही थरे प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई हो ओनली सिंगल प्रोडक्ट जदि से करछि ताहले हो okay let me start process costing okay now let's process costing what is process costing is an accounting methodology that traces and accumulates direct cost and allocates indirect cost of a manufacturing process. It is a method of assigning cost to unit of production in companies producing large quantity of homogeneous product. Look here, it is homogeneous product. Okay, ताले similar product ऊपर ही सेट हुए जोड़ा मुझे तुमको कहना. And now applicability को फिर ये process costing apply होगी जैसे मैं तुमको कहली sugar cane industry, like that there are many other industry, chemical industry, soap industry, box industry, biscuit industry, cakes, work, meat products factory, milk dairy. There are too many industries. Okay, in which this is applied. Okay, जो theory मैं तुमको एबे देखो जी on your screen, you have to write it down in the copy and read it. Okay, तो मन तको pause करेगी लिखो and मते घोषी की दिया. These all are important for your exam point of view. Anyways, now features. What are the features of costing? Features you can see here. As I had said, there is homogeneous product. Then the process is continuous and passing from 2 or more processes. दीटा की अधिक प्रोसेस रो गले ही that is process costing. Then similar product रहिबो. Then if the plant and machinery is shut down for repairs, then the entire production is shut down. तो तमे जानछो प्रोसेस 1 जो पन कंप्लीट हेनी प्रोसेस 2 स्टार्ट हे परिबोनी. ताले जदी रिपेयर पई हमर मशीन को पॉज करा गला ताहेले हमर प्रोडक्शन से स्टॉप हो जाय. किछ और काम करते हैं. Then management has clearly defined that there are 3 types of cost involved in cost accounting. But that is material, labor and overhead. बुझिपाल ताले 3 प्रकार खर्च ही अछि जोटा कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग रे लिखा होवे मन रखिबो मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड ओनली 3 एक्सपेंसेस एंड वी नो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस सो एक्सपेंसेस सब डेबिट साइड रे लिखा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग you can see here and you can read as you know it is very less expensive it is very simple to calculate I will make you understand this then it is done in very short interval suppose तुम निजे भाबो तमे कॉस्टिंग रो खर्च गुडी को लेखि लेखि चलछ पर यूनिट खर्च लेखुनो ठीक अछि गोटे सपोज केडिला गोटे मैच बॉक्स 50 पैसा रे मैच बॉक्स बट से 50 पैसा रे मैच बॉक्स पे तमे गलो 2 किलोमीटर सपोज तो तुमरे पेट्रोल खर्च होला एमते बहुत बड़े खर्च अछि आमे ताको सेते बेले देखो ना आमे कोन करिया हिसाब करिया ईयरली अकाउंटिंग ईयरली सेते बेले कोन होछ ना हमर मैन्युफैक्चर माने आमे गोटे ऑडिटर को रखिया से ऑडिट करी देखिबा हमर एटा खर्च केमती है
so it is very expensive, isn't it? But जदि आमे process costing रू मूलरू करी करी आसिया माने from year starting, then कौन हबा per unit पिछारे केते खर्च हो जम ताको लेखि लेखि चलते, तो at the end it is very simple to calculate and understand कि हमर खर्च को बाटे रे diversify होछ and how should we control it. So this is the advantages of process costing. Line by line जीवा ताकि हमें accounting वाले पूरा directly year end को जीवा. Okay. And you can read from here the other advantages like the disadvantages. There are many disadvantages also because it is not very useful in control. आमे से ना भाबुची आमे कंट्रोल कर दवा एबे 50 पैसा रो मैच बॉक्स पई तमे बाजार रे पेट्रोल जति की भी खर्च होला तमे कोन देखुछ ए याको के हिसाब करछि परे देखियो. सो वी इग्नोर द मिनिमम कॉस्ट 10 पैसा खर्च होला 50 पैसा खर्च होला छाड़ हम ताको रेकॉर्ड कर बट दैट 50 पैस केते बळे 50000 हे जिवो due to our ignorance we can't think we will have to repent, so better to work it with. Anyways, like that there are many disadvantages. You can take the screenshot and you can write and read. Okay, there are also many error here. You can see in the disadvantages there are many errors also. Okay, because when we write about prices, okay, not in rupees, in paisa, then there are many errors occur because we are human, we are not computers, so in accuracy we also face many problems. Anyways, then let me give you an example. Okay, this is the question of process costing. Okay, let me make you understand how to do this. Okay, focus on the question. Look, here it is. Pharma process, it is the name of a company. Pharma processes a product through 3 distinct stages. There are 3 stages. Okay, process A, process B, process C. So there are expenses here, you know, direct material, direct wages, overhead expense. I had already said you 3 प्रकार खर्च तमे पाइबो. Okay, remember मो एटा भी तुमको कहि जे जो पर्यंत प्रोसेस A न सरी छी से पर्यंत प्रोसेस B को जीवो नाही. Okay, first you have to complete this, then you have to go here, then you have to go here. Okay, now let me start. Okay, here you see this is the format of process costing. Okay, this is, as you know, particulars, this is amount, or you can use it as per unit. First I am writing per unit, then I will write total cost. Okay, you have to give here rupees sign. Okay, give here rupees sign, then here particulars, then per unit and total cost. Okay, now see here what are the this is the debit side and this is the credit side and this is process A account. Okay, I am doing process A. Look, what are the expenses of process A? In process A, there is raw material, wages and overhead. So I am writing here to raw material, to labor, to overhead. As I had said, it is expenses, so it should be written in debit side. Okay, what is the amount? It is 1150, 500, and what is the overhead expenses? 3600. But 3600 process A रो नुह, तीनटा जाको process रो. It लिखा है जी देखो. The overhead expenses for the period is 3600 to be distributed to the processes. It is not process. Processes. Note here. Okay. So on the basis of direct wages. So direct wages is 500, 600, 700. Total केते हला? यदि तमे ताको प्लस कर दोचो 500, 600, 700. This is equals to 1800. Okay. So what is the ratio? Here you have to calculate the ratio. It is 500 divided by what we have done here. 500 divided by 1800 into
overhead expenses ଯେତିକି ଥିବ 3600. It comes to rupees 1000. Okay, I hope you are getting my point. Now what is the per unit expenses? माने टोटल खर्च है 1150 तो गोटे यूनिट पिछा केते खर्च है एठी निश्चय तुमको यूनिट्स देइथबो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस एट देखो द टोटल आउटपुट इज 1000 kilos. Okay, so you have to write here output equals to 1000. Okay, you have to write here and you have to divide this total cost with the total quantity. Okay, so 1150 divided by 1000 it comes to 1.15. 500 divided by 1000 it comes to 0.5 and 1000 divided by 1000 it comes to rupees 1. I hope you understand per unit केमते बाहरला. Now you what should be written in the credit side. So credit side रे किछि भी नहीं, credit side रे loss गुड के लिखा हुए normal loss, abnormal loss. Okay, and balancing figure. So जेहेतु क्वेश्चन में किछि भी loss ऊपर किसी देनी, so wait for my next video. Second one को loss भी करेंगे. Today I am taking only fundamental class. Okay, now listen. देखो तो हमें पढ़ी दिया ये किसी भी देनी खाली खर्चा देला एंड 1000 kg देला तो मु डायरेक्ट ताको बैलेंसिंग फिगर नोच व्हाट विल बी द बैलेंसिंग फिगर देखो ये टोटल हैला हमर 2.65 एंड हियर टोटल हैला 2650. ओके, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखिबो नाही बाय प्रोसेस बिया. ओके, बिकॉज एठी जहाँ खर्च है ताकू बियर परिवर्ते प्रोसेस बी तारा या को कोंती कोन आउटपुट यार आउटपुट प्रोसेस बी रो इनपुट हे जो. सो हियर यू हैव टू राइट 2650 2.65. ओके, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव टू डू like this you have to close this. Okay, and like this we have to prepare process B account. Okay, here look I am preparing process B account. Same format. I am not writing again and again. Okay, particulars rupees amount in shortcut I am writing here. Okay, per unit rupees, total rupees. Okay, total and per unit total. Okay, now this is particulars. Anyways, now what will be the next step? Here are also expenses. देखो B रे भी देइछि खर्च गुडी को एठी देखो तो ए खर्च गुडी को मैं एठी लिखिबी but first I have to brought down ये जो कैरेट डाउन है यार खर्च मते B को दबाक पड़ियो तो इट इज इन द राइट साइड तो एटा लेफ्ट साइड को आसीबो. ओके, एठी लिखिबो टू process A account. To process A account 2.65 2650. Okay, वो 8 to 80 carry down कर. Okay, now खर्च गुडी को लिखो to raw material, to labor, to overhead. Okay, तो B रो कौन अच्छी खर्च तो B रो अच्छी 1050 600. Okay, 1050 600 and what about overhead? Overhead देखो 600 divided by 1800. सेम प्रोसेस जमते हमें प्रोसेस एरे करते थे. ओके, सेटा हैला 600 divided by 1800 into 3600 it comes to 1200. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. एबे हमें पर यूनिट खर्च बाहर करबो. एठी आउटपुट केते अछि सेम 1000 units. Okay, it is the output. So per unit केते हला एटा हला 1.05 600 divided by 1000 it comes to 0.60. 1200 divided by 1000 it comes to 1.20. Okay, खर्च सब दे देली as usual. क्रेडिट साइड में किछि नहीं because loss नहीं किछि भी normal loss abnormal loss. So we have to carry down. Okay, next total करिवो. total हला 5.50. Okay, and total एठी हला 5500. now carry down करिवो तो हमें कौन लिखिबा बाय प्रोसेस सी account.
5.50 5,500 टोटल कर दिया 5.50 5,500 balance. I hope you understand. Then as in the question it is given there are 3 process, 2 process is over. ताले यार एटा कौन input एटा कौन होगा output को जीवो process C को देखो process C है same format. Okay, now we have to carry it down per unit, total cost per unit, total cost, particulars, debit, credit. Now we have to brought it down to process B account. Okay, process B ru asla brought down 5.50 5,500. Get it? Now expenses. देखो C रे कौन expenses थिला? We have to check it down. It is 700. So write it down first. To raw material, to labor, to overhead. Okay, that raw material what I have said 700, labor 700 and overhead same thing calculate करियो as usual 700 divided by 1800 into 3600. Okay, so it comes to 700 divided by 1800 into 3600. So here it comes to 1400. Okay, it comes to 1400. Now here it is 1000 units. Okay, so divide it like that. 700 divided by 1000 comes to 0.70. 700 by 1000 0.70. 1400 divided by 1000 it comes to 1.40. So it is done. There is nothing in credit side, so we have to total it. Then total kare it is 8.30 and it is 8,300. Okay, now out process nahi, process C is complete. So process D आउ नहीं एठी हमरो 300 सरला माने या आगु को प्रोसेस हे परिबोनी एठी हमरो 300 तैयारी हे गला रेडी हे गला. So we have to name it by finished stock account. Okay, तम एठो process D लिखियो it is finished stock आउ एटा brought down होबनी. Okay, it is complete. So 8.30 8,300. Okay, totally 8.30 is complete. I hope you understand. But आउ टिके रही गला तमरो. I hope तुम एटा बुझी पारले भल से. एटी देखो in the question there is also a second point. Okay, first bit is over, bit A is complete. Bit 2 re there is a adjustment. So if 10% of the output is lost in storage and giving samples, what should be the selling price per unit to make a profit of 33% on selling price? से कहूँ जदि 1000 यूनिट्स अच्छी तुम आउटपुट जदि से नष्ट माने 10% इज लॉस्ट चोरी हो गला कि भी है. ओके, फ्री सैंपल देदेल कमीगला कि भी है. सो तुम आउटपुट कमीगला से अनुसार खर्च बढ़ न कम. बट तुमको 33.3% तुमको लाभ रखिबार अच्छे. ताहले तुम बाहर कर व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस. ओबियसली हमको सेलिंग प्राइस बढ़ाया पड़ो कहीं आम खर्च बढ़ुची लॉस हो गला. सो ताकू केमती कर देखो देखो पॉइंट बी. ओके, से देला आउटपुट देइछि दिस इज 1000 यूनिट्स है देला लॉस 10% कहार ऑफ 1000 इक्वल्स टू केते बाहर 100 यूनिट्स. सो व्हाट इज द न्यू आउटपुट. ओके, न्यू आउटपुट इक्वल्स टू 1000 minus 100. This is equals to 900 units. Then we got the new output. Okay, now coming to next, what is in the question? Let me read it out again. Profit. Gross profit is 33.33% on selling price. Okay,
So now given gross profit is equals to 33 whole 1/3% on selling price. This is equals to 100 by 300 100 by 300%. 100 by 300. I have converted the percentage into number. Okay, 100 by 300 of selling price. So we don't have the selling price. We have cost price, which but we don't have the selling price. Okay, there is simple trick. देखो याको काटी देला हला 1/3. As we know, 1/3 of selling price is equals to 1/2 of cost price. जेत जहाँ भी बाहर ना ताको गोटे कमे जाए. सपोज ये 1/4 बाहर था सेलिंग प्राइस उपरे ताले हम 1/3 नहीं जाई था कॉस्ट प्राइस उपरे. ये कमे द 1/10 हेले 1/9 नहीं जाई था. ठीक है, ये हमर 33% होचे 1/3 सेलिंग प्राइस उपरे. ता माने कॉस्ट प्राइस उपरे 1/2. ओके, नाउ वी हैव टू मूव. देखो तमर टोटल केते हेतला एठी फाइनल आंसर फिनिश्ड स्टॉक एटा जोड़ा बाहर थला. ओके, इट इज 8300 फिनिश्ड गुड्स. तो ये देखो फिनिश्ड स्टॉक इक्वल्स टू 8300. दैट मीन्स दिस इज द कॉस्ट प्राइस. ओके, 8300 तमर टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 8300. बिकॉज आम देख ये हेडिंग रे भी देइछ इट इज टोटल कॉस्ट. ओके, टोटल कॉस्ट कम्स टू 8300. ओके, सो नाउ 8300 कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट बाहरी गला हमर 1 न नहीं कि हमें 1/2 ना. तो 1/2 ऑफ 8300 इट कम्स टू केते हम देखो. तुम डायरेक्टली एमते भी करो कि तुम पर यूनिट ऊपर खर्च नहीं गले भी तुम हम. नो, एक्चुअली वी डोंट डू लाइक दिस. देयर इज अनदर मेथड. सपोज लेट मी फर्स्ट क्लियर इट विथ. ओके, ये जे बुझिला तुम फिनिश्ड गुड्स इज 8300. ओके, नाउ टोटल क्वांटिटी हमर केते भारला. क्वांटिटी भारला 900 यूनिट बिकॉज 1000 रु 100 नष्ट हो जाई. Now what is the per unit cost? मुझे आगे per unit बाहर कर दो. per unit रे सब बाहर करेंगे. ओके, per unit cost जो बाहर करेंगे cost per unit. ओके, what will be the what will be the cost per unit? This is equals to 8300 divided by 900. Total cost divided by total units. Okay, it comes to 9.22 rupees. It is in rupees sign. Okay, 9.22. ठीक है. Now what will be the selling price to earn a profit of 33 or 1/3%? मुझे already बुझे देली. It is equals to 1/2 of cost. So now gross profit is 1/2 of 9.22. Okay, this comes to 4.61. Okay, now what will be the selling price? Selling price equals to, as we know, cost plus profit. Okay, so cost is 9.22, profit is 4.61. Okay, it comes to 13.83 in rupees. So hence it is the conclusion to earn a profit of rupees 13.83 or 33 whole 1/3%. The selling price, okay, of the finished goods should be rupees 13.83. Here I have done some mistake. This is not 13. This is 4.6. Here it is. This is the profit, no, and this is the selling price. To earn a profit of 4.61, we have to sell the finished goods in 13.83%. Okay, I hope you understand. Okay, read and write it completely. Also lekhibo copy re bujhibo and wait for my next video. Okay, like, comment and subscribe. Thank you.